क्या चाहिए बेटा? Sir, material. You're talking about material, na? I had given the material regarding the architecture through the ages in Indian context. Okay, sir, but we did not get. क्या बेटा, मुझे आवाज नहीं तुम्हारी आ रही है क्लियर। तो सर अभी आपका मटेरियल आपने सेंड सर को क्या होगा, अभी स्टूडेंट्स को नहीं भेजा क्या वैसे? अच्छा ठीक है, वो आपको दे देंगे, मैंने आलोक जी को दिया है, तो आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए उसको, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, द आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। अपने ग्रुप पे देखोगे ना, जो ग्रुप पे मैंने अभी जस्ट शेयर किया है, सर का जो मटेरियल है शेयर कर दिया है, देख लेना। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, आप लोग उसको देखें। और टुडे आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट योर फर्स्ट यूनिट, दैट इज द origin of the physical forms, different symbolism। इसमें मैं 2 क्लास आपकी लूंगा, एक क्लास तो आज मैं लूंगा जिसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि how this concept of architecture emerged in Indian context, और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊं। आई होप कि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है आप लोगों के पास? एकदम क्लियर है। ओके, सो वी नो दैट, शुड आई स्टार्ट? आलोक जी 1 मिनट है अभी। Should I start, dear students? Yes, sir. Or should I wait for someone else? Sir, we should wait 2-3 minutes for the students. Okay, just I will wait. In the meantime, if you want to ask anything regarding your syllabus, regarding your course, you can ask me. I think कि आपको थोड़ा सा मन लग रहा होगा, क्लासेस चल रही होंगी आपकी, ठीक है? तो आप लोग कुछ पूछना है किसी को? यस सर। हाँ बताओ। सर क्या हम लोगों को क्वेश्चन और आंसर्स मिल सकते हैं सर, क्योंकि हम लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमसे कैसा आंसर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देखो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन, आई विल जस्ट आंसर योर क्वेरी। पहले जो एग्जामिनेशन होते थे जब ये कोरोना का काम नहीं था, तो बकायदा उसका एक सेट पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, जिसमें आपको कि ऑब्जेक्टिव भी होंगे और शॉर्ट आंसर टाइप भी होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन होते थे, ठीक है? तो मुझे नहीं पता कि इस सेमेस्टर में आपका किस प्रकार का पैटर्न होगा एग्जामिनेशन का, वो आपको आलोक जी क्लियर कट बता देंगे, ठीक है? अदरवाइज जो अभी जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं अभी बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन, उसमें ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है जिसमें 8 क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आलोक जी विल बी करेक्टिंग मी, कि उसमें 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 17.5 मार्क्स। ये हमारे डिपार्टमेंट में है, और आपके यहाँ क्या पैटर्न है मुझे नहीं पता। बाकी यू हैव टू गिव द असाइनमेंट फॉर 30 मार्क्स, यू हैव टू गिव द असाइनमेंट, दैट इज द इंटरनल इवैल्यूएशन, एंड 70 मार्क्स विल बी योर थ्योरी पेपर। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आई हैव विद मी सम, I will try to give it to Alok ji, he will post in the group so that you people can have a look, or you can consult your seniors if you know your seniors. I think some of your seniors they have passed out from this course, so you can consult them also. Okay, anything else? No sir. Okay, fine. So I will start right now. And I will be talking about the emergence of the temples in India. And we know that the temples in India as an architectural unit, it emerged out of certain concept about God and gods and its relations with the human being. And it seems that these temples have developed over a long period of time, and that we know starting perhaps around 4,500 years ago from now, that is during the urban or the mature phase of the Indus-Saraswati civilization or the Harappan civilization, and it is continuing thereafter
till about the 16th century, that is the development of the temples in India. और हम जानते हैं कि भारतवर्ष में जो हजारों वर्ष की संस्कृति में जो धर्म का जो है सो बहुत ही बड़ा योगदान या प्रमुख स्थान है, और हम सबों के जो कर्मों का संचालन, हमारे धार्मिक विचार या मानव जीवन के कर्मों का संचालन जो करता है, वह जो मनुष्य का जीवन दर्शन है वह इसी पर आधारित है. और when we talk about the different purusharth in ancient India, which you people will be taught in due course of your course, four purusharth we know: arth, dharma, moksha and kam. And we know that in that the attainment of the moksha is the most superior or the supreme one, and all our deeds or the works, they are just confined to it only. And when we talk about the Vedic traditions, Vedic parampara mein, we know that the concept of previous birth or the previous life is narrated. Then there is a mention in Brihad Aranyak Upanishad that यदि तपस्या का जीवन व्यतीत कर कोई व्यक्ति ब्रह्म में लीन होने के लिए प्रयत्न करता है ताकि उसे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाए, तो जिस प्रकार से मनुष्य को वेदांत का परम ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वह संसार में पुनः जन्म लेता है. ये सभी आप जानते हैं. और उपनिषद में खास करके जो छंदोग्य उपनिषद है और आरण्यक उपनिषद है, उसमें कर्म के सिद्धांत पर बहुत ही ज्यादा बल दिया गया है. और इसी का जो प्रतिफल है वो हम देखते हैं, वी encounter in the Vedic age, and there we can find out there was the provision of the worship of the nature. बहुत प्रकार के प्रकृति देवी देवताओं की पूजा का विधान हमको ऋग्वैदिक काल की जो टेक्स्ट है, जो साहित्य है, उसमें दिखाई पड़ता है. और दार्शनिक विचार के साथ रुद्र और विष्णु, इनकी पूजा का उल्लेख हमको सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है. यजुर्वेद में हम लोग रुद्र के वर्णन के बारे में बात करते हैं. प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द टेम्पल्स. और अभी हम बात कर रहे हैं वर्शिप की. एंड ये जो प्रकृति के देवता हैं, ऑल द फ्लोरा, द फ्लोरल वर्ड इन द वैदिक कॉन्टेक्स्ट as well as the faunal world, they all were related with this concept of worship during the Vedic period. Or we come across or we know about the various gods and goddesses which have been mentioned in the Vedas, and but in that Rudra, Indra and Vishnu, they were the prominent one. And besides that, we also find about the mention of other gods and goddesses at the time of the performance of the yajna in the Vedic period. And during the Vedic period, there is an emergence of this institution of this worship. And in Aitariya Brahman, there is a slope, यज्ञों पे विष्णु, मतलब सभी देवताओं में विष्णु वो श्रेष्ठ समझे गए वैदिक काल में. There is another mantra where it is said that Vishnu param tadantarain sarva anya devata. So it is very relevant to tell that the concept of Vishnu, which is mentioned in the Purans, has been taken from this concept of Vishnu from Rigvedic period. We also come across the various incarnations of Vishnu like Vara or Vaman, and in the Pancharatra text
we also come across a kind of sect that is the Bhagavad sect. So we have to understand in the different time frame, starting from the early centuries of the Christian era, how these gods they were worshipped. We do not find any mention. I am talking about, we do not find any mention of the particular shrine or the temple where it is mentioned that how these gods and goddesses were developed. So, but somewhere in the Vedic text, we come across the terms like Devalaya. And similarly, we can say that these Devalaya were the equivalent to the mandir or the temple, if I am not wrong. But some scholars, Western scholars, they consider that the term Devalaya, which is connotated with the concept of temple, it should not be equated with the temples as such. But the construction of these temples after this Vedic period was definitely there in the later Vedic periods. And for that, we come across the examples of the temples in Mahabharata and subsequent other texts. And in Mahabharata, we come across the terms like Devasthan, Devayatan, Devalaya, or temple. And all these things give us the meaning of the place of residence. Devasthan, Devayatan, Devalaya और मंदिर. तो यह कहना उचित होगा कि वैदिक परंपरा में हमको मंदिर के लिए स्थान नहीं था, ऐसा कहना बिल्कुल ही उचित नहीं होगा. यद्यपि पुरातत्व की अगर हम बात करते हैं तो वी डू नॉट फाइंड एनी एविडेंस ऑफ सच. So for the first time, in ancient India, in 4th century AD, we get the reference about the construction of different temples in India. When we talk about the Vedic text, we are getting the reference of Sulbasutra, which gives us the details of various ritualistic architectural, including the various shapes and the various measurements of the architectural components. And whatever the architectural narrations are there in the Vedic text, they are all related to the open air sacrificial on platform or altar. And primarily it was devoted to the fire related rituals, and not it was a closed building or the regular temples as we can see in the 4th century AD. When we come to the stages of the early development or the era of integration of in the pan-Indian context regarding the evolution of the temple architecture, so we can see that in the early historical period of Maurya, Kushan, Song period,
we are getting the evidence of the open air shrines. And these open air shrines were the places where the object of worship, they were kept under the sacred tree or the groups of the water bodies, and they were considered as the place of worship or the symbol of worship during that period. And we can say that these all were the continuation of the Indus, Saraswati or the Vedic tradition during that period. Moving further, the tradition of the place of worship as well as the symbol of worship, when it was combined together, it gave to the concept of the house of God. And this is the main thing which lies the origin of temple as such in India. So the important element in it was the feature of the house, by which very name is closed structure with walls and the roof. So this phenomena seems to have developed in India only after 800 BCE, and that was generally the beginning of the Mahajanpad period. So the temple, whether it is Hindu, Buddhist or Jain, they have not been just a place to offer the prayer. In India, temple in fact is a residence of the God. We offer prayers to the deity standing directly or sitting right in front of the deity. And this is the most vital point to keep in our mind, that all the times, whether it is Alay, that is Devalay, Prasad, Deva Prasad, body, for example, Kali Badi, Mandir, all these things denote the one structure, that is the temple. So, since this temple is a house, its basic architecture emerged out of the type of the houses, including the huts in India or from the Neolithic period of the early Harappan culture around 600 to 500 BC. And we know that the thatched hut of the village in India seem to have provided the earliest model for the construction of the temple in India. And this concept or this thing which I am telling you is based on the fact that we have encountered an apsidal or elliptical temple dated to 500 BCE at Vidisha in Madhya Pradesh. That is the earliest example. But sometime we come across an inscription of Bhoshundi in Rajputana region. राजपुताना में चित्तौड़गढ़ के पास एक संकर्षण और वसुदेव की प्रतिष्ठा का यह मंदिर का हमको वर्णन मिलता है, बलदेव और वसुदेव का। और वहां एक लेख मिलता है जिसमें ऐसा कहा गया है, हालांकि ये लेख जो है बहुत बाद का है। मैंने आपको कहा कि अर्लीस्ट एग्जाम्पल एक्साइडल टेम्पल के फॉर्म में हमको भारत में मिलते हैं विदिशा से।
और उस लेख में ऐसा कहा गया है, भगवताभ्याम शंकरसनम वासुदेवाभ्याम अहिताभ्याम सर्वेश्वराभ्याम पूजाशिला प्रकारो नारायण वाटिका। तो ये उसका जो है सो जिक्र हमको प्राप्त होता है। और जो 500 BC की जो बात कर रहा था मैं आपके जो अर्लीस्ट टेम्पल के एग्जाम्पल की, दैट इज इन द सेंट्रल इंडिया नियर विदिशा, एंड वी नो दैट देयर इज अ प्लेस which is known as बेसनगर। एंड बेसनगर के बारे में किसी कुछ पता है? Why it is so famous? Can anybody tell me? I think, can you hear me? ऋषभ, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सिप्रा? यस सर। यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। तो बेसनगर का नाम आप लोगों ने सुना है? नो सर। बेसनगर मध्य प्रदेश में विदिशा के पास एक जगह है, और वहां पे एक जो है सो पिलर है, जिसको कि हम लोग हेलियोडोरस का पिलर कहते हैं। हेलियोडोरस का पिलर, आपको कभी मौका मिलेगा तो आप वहां जाइएगा, देखिएगा। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पिलर है, वहां पे एक यवन राजदूत था जिसका कि नाम था अंतल्पितस, और वो वहां के जो राजा थे उस समय उस क्षेत्र के, उसका नाम था भागभद्र। उसके राज दरबार में आया था, और चूंकि यहाँ पे उस समय जो मैंने आपको बताया कि भागवत धर्म का इतना ज्यादा या महाभारत का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार था उस क्षेत्र में, और वो जो यवन राजदूत था, he was so impressed by this particular religion which was prevalent in that region, that he had adopted the Bhagavatism। वो यहाँ आने के बाद उसने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया, और उसी के लिए जो है सो उसमें उन्होंने वहां पे एक स्तंभ की स्थापना की, और उस स्तंभ के ऊपर में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना की है। और वहीं पे जो मैंने आपको बताया कि जो एप्साइडल टेम्पल का जो रिमेन्स हमको दिखाई पड़ता है, आज भी आप वहां जाएंगे, यू कैन सी द रूइंस ऑफ द टेम्पल ऑफ लॉर्ड विष्णु देयर। ठीक है, और उसमें अभिलेख भी है, वहां पे लिखा हुआ वसुदेवस्य वासुदेवस्य गरुध्वजम, और अयम कारिता हेलियोडोरेन, तो पूरा अभिलेख लिखा हुआ है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। आप जब अगर वहां जाएंगे तो यू कैन सी दैट वन। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द अर्लियर फॉर्म ऑफ दीज टेम्पल्स इन इंडिया। सो द विलेज हाउसेस, वी नो दैट दे वेर ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन द ग्राउंड प्लान। अगर गांव के जो भी लोग हैं वो जानते हैं कि ये जो झोपड़ी होती है गांव में कितने प्रकार की कैसे कैसे होती है। वी आर गेटिंग द ground plan of these villages houses as a round one, square one, as well as the rectangular one. So when this round is being combined with the rectangular, it gives the fourth form, that is the apsidal form. And sometimes it gave rise to the oval or the elliptical forms on ground plan. So whatever the plan which we have got in the 500 BC of the temple is of the apsidal on plan, which must be inspired from the village architecture or the hut architecture of the houses of the villages in India. So the evidence of the architectural representation in the early historical art of 300 BC till the emergence of the Kushan period in 300 or 3rd century AD shows that the huts which were later on elevated and given the status of the prasad by different sthapatis or the craftsmen, and because of this, during the time of the Shunga Kushan period in 200 AD, we are getting the emphasis on the
built temple structure in India. And in the late Kushan period of 2nd, 3rd century AD, in the regions of Mathura as well as other parts of India, we know that that was the region, that was the time when various foreigners, they came to India and they have constructed so many architectural edifices at the land of India. So after this one, the 4th century AD was the turning point in the history of the architecture, or rather to say the temple architecture in India. And we know that in 320 AD, one person, his name was Srigupta, he laid the foundation of the Gupta Empire, and thus the Gupta culture emerged in India. And after him, his successors, they followed the cultural ideology of Srigupta, and they also tried to elaborate and enhance the cultural tradition of the Guptas. So it was the ideology of the Bhakti movement, of the Bhakti. And what is Bhakti? We know that in Bhakti, the Bhakt or the devotee, he perceives his God in some form, in the form of image or the symbol, more particularly the Vaishnava, and they are known as Param Bhagavat. So during the Gupta period, that is from 400 AD to 600 AD, temples of all the faiths in India, whether it is Shaiv, Shakti, Buddhist, Jain, they flourished side by side at the land of India. And we know that there was no any class among all these faiths. Their principle of this harmony was based on the intellectual depths of their teachings of their gurus. And this bhakti or the devotion, you know that it stands for two elements. Here, one is the supernatural one, who is considered to be the ultimate controller of our all destiny. And the second one is the bhakt, that is the human being, who through the golden road of the personal devotion, which is known as astha or faith, can make the supernatural, this being, free from all these worldly affairs, and he attains the moksha. So this element of personal devotion to the Supreme God became the main feature of this bhakti movement from 4th to 6th century AD. And here, because of this, the emergence of the God took place. And in this concept of bhakti, two separate spaces had to be provided in the temple. So that is the one is for the God and another is for the devotee. So now here comes the concept of Garbhagriha as well as the Mandap. So all these two elements are, the important elements of the temple architecture. Garbhagriha, which is the sanctum sanctorum, where the main deity, he or she resides, as well as the mandap, where the performance are being performed by the devotees or the bhakts.
So this earliest example of this kind of arrangement of Garbhagriha as well as Mandap, it comes from the region of Sanchi or Central India, where we find out the emergence of this temple, that is the temple number 17 at Sanchi. And here, the roof of this sanctum sanctorum or this temple was flat, and it was enclosed by the walls all around, and there was only one entrance, and the flat roof porch was raised on the pillars with open sides. Afterwards, we come across the emergence of the other temples at Kankali Devi Temple of Tigwa, Vishnu and Varaha Temple of Eran in Sagar district of Madhya Pradesh, and the Parvati Temple at the village of Nachna and Kuthar in Madhya Pradesh. So undoubtedly, there must have been temples of the other gods also, like Vishnu, in that area. And here, now moving further, it may be said that the separation of this Garbhagriha or the Kaksh and the hall of Mandapa for the devotee was started in 4th century AD, and later on the single story structure was evolved in case during the time of the Gupta Vakatak or the early Pallav period in Indian architecture. And for that, the Dasavatar temple of Devgarh in district Jhansi is a second or the double storied structure where we are finding the Sikhar as well as the Viman over the main temple. So now you can imagine from the Vedic period or from the later Vedic period, where it was the gods, they were worshipped in open space under the tree. They were given a proper form in the form of Devalaya or the Mandir during the 4th century AD. So, after this one, we come across the creation of the other structures of during the subsequent periods of temples. So we can say that the Gupta temple of the central India, it has laid the firm foundation to the temple art and architecture in India. And after that, we do not come across any stoppage or a stop point in this direction of Indian architecture. When we talk about the South India, the element of Gopuram, that is the entrance gateway to the temple premises, in several storied structure, was another feature for the emergence of the element in case of the temple architecture. So up to 5th and 6th century AD, we find a kind of unilinear development in the temple architecture, and later on, from the 7th century onwards, there is a multilinear development of the temple architecture evolution in India. So here what happens? Now the different styles of architecture,
they are emerging, and these styles are the Nagar style, Dravid style, as well as the Vesar style of temple architecture. What happens in this case? The shikhar of the temple is not developed. Curvilinear shikhar in case of the Nagar style of temple, but in case of the Dravid style of temple, it developed into a stepped viman, which is known as the stupi, in case of the Dravid temple of South India. Beside that, the shikhar of the apsidal temples in the Pattadakal or the Ahole area, they were of the apsidal in nature, and that is why they are known as Vesar style of the temple architecture. So this is all about the development of the various architectural styles as well as the emergence of the temple architecture in India, right from the Vedic period to the Harappans and to the Mahajanpa periods and to the Mauryans, Shonikushan, and later on up to the Gupta period, and after Gupta period onwards, we see the gradual development in terms of the various architectural elements in case of the temple architecture development in India. So just I will be stopping here today, and if you have any query up to this portion regarding the origin and evolution of the temple architecture in India, and in next class I will be talking about the various meanings, the forms and the philosophy behind the construction of the temples in India in my next class. किसी को कुछ पूछना हो यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं उससे. No, sir. सब समझ में आ गया. अर्लीस्ट टेम्पल कौन सा था? अगर कोई पूछे आपसे तो बता देंगे ना? Tell me. अरे किसी का कोई प्रश्न नहीं है? कुश, अजय, ऋषभ, शिप्रा, कोई प्रश्न नहीं आप सबों का? गुंजन, पायल, पूर्वी? यस सर. कुछ पूछना है आप लोगों को? नो सर. मैंने आज मैंने बात की कि भारत में कैसे मंदिर का उदय हुआ और कैसे कॉन्सेप्ट जो देवालय है, देवायतन है या जो आपको मंदिर कहते हैं कैसे आया, गांव का जो हट का आर्किटेक्चर है इसका प्रभाव इसके ऊपर कैसे पड़ा, कैसे बना, डेवलपमेंट कैसे हुआ इसके शिखर का, और जो मंदिर के अलग अलग भाग होते हैं, मंदिर के अंदर जो सबसे मेन भाग होता है वो होता है गर्भगृह, जहाँ पे कि जो मुख्य जो देवी देवता होते हैं वो उसमें रखे जाते हैं. उसके बाद जो है सो मंडप होता है, और उसके बाद जो है सो मंदिर में जाने के लिए अंदर जो होता है वो अंतराल, सोपान, ये सभी कंपोनेंट होते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के, जो कि आपको बाद में हम बताएंगे अलग अलग. केवल आज मैंने एक ब्रीफ में आपको ये बताने की कोशिश की कि भारत में मंदिर का उदय कब और कैसे हुआ और क्या उसके पीछे की क्या भावना थी, ये कैसे हमारे जीवन के धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम जो 4 पुरुषार्थ हैं उसके साथ कैसे जुड़े हुए हैं. आप सभी जानते हैं कि हमारे 4 आश्रम हैं भारतीय जीवन में. इसमें से सबसे जो पहला आश्रम है वो आपका कौन सा आश्रम है? 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य का आश्रम है, उसके बाद वानप्रस्थ है, उसके बाद गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और फिर संन्यास आश्रम है. इन 4 आश्रम से 4 पुरुषार्थ हमारे जुड़े हुए हैं
और जो मेन जो सबसे मुख्य जो पुरुषार्थ है, जिसको चतुर्थ जो पुरुषार्थ कहते हैं, वो है मोक्ष की प्राप्ति। और वो हर जो भी टेम्पल का कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो भी हिंदू है, उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है हमको मोक्ष की प्राप्ति, जीवन और मरण के मुक्ति चक्र से मुक्ति। और यही जो है सो हमारे मंदिर के निर्माण की मुख्य आधारशिला थी। और उसी के आधार पे जो है, उसी की वजह से भारत में मंदिरों का उदय हुआ, जिसके बारे में और भी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वास्तु पुरुष मंडल क्या है और मंदिर जो बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। अभी मैंने केवल आपको मंदिर के प्रारंभ की बात बताई कि जो पहले पेड़ के नीचे कुछ, अभी भी देखा होगा कई जगहों पे कि वहां कुछ पत्थर के टुकड़े रख दिए जाते हैं और उसकी पूजा शुरू हो जाती है। और यही अवधारणा हमारे ऋग्वैदिक काल में भी थी, जो ओपन एयर में थे हमारे। बाद में धीरे धीरे जो है सो एक स्वरूप दिया गया उनको। और इसके लिए मैंने आपको उदाहरण घुसुंडी के अभिलेख बताए, जो कि राजपूताना के क्षेत्र में, जहाँ पे कि नारायण वाटिका का जिक्र आता है और वहां पे हमको मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा जो विदिशा का जो क्षेत्र है, वहां से भी हमको 5th सेंचुरी BC में एप्साइडल टेम्पल्स के रिमेन्स मिलते हैं। और उसके बाद जब हम बात करते हैं मौर्य काल में, तो इसके अवशेष या उदाहरण बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। वास्तविक इसका स्वरूप जो मंदिर का है वास्तुकला के दृष्टिकोण से, that we encounter only during the 4th century AD, that was the period of the emergence of the Gupta period by Sri Gupt in 320 AD। और उसके बाद जो उसके जितने भी सक्सेसर हुए, श्री गुप्त के बाद चंद्रगुप्त हुए, उसके बाद समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, कुमारगुप्त हुए, इन सभी शासकों ने अपने शासन काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। और उसके बाद अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहां भी पल्लव काल के शासकों ने, और पल्लव के बाद और भी जो राजवंश के लोगों ने, चालुक्य हैं, चोल हैं, विजयनगर के शासक हैं, इन सभी लोगों ने अपने शासन काल में बहुत सारे हिंदू धर्म से संबंधित मंदिरों का निर्माण करवाया, रथों का निर्माण करवाया। और इसके अलावा जो है सो जो पट्टाडाकल का क्षेत्र है, कर्नाटक का जो कुछ क्षेत्र भाग है, वहां पे एक अन्य प्रकार के शैली का विकास होता है, जिसको कि हम लोग उत्तर भारत के जो भी मंदिर है वो आपको नागा शैली के मिलते हैं, और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो आपको द्रविड़ शैली के मंदिर कहे जाते हैं उनको। और जो कर्नाटक के जो क्षेत्र, जो बादामी और पट्टाडाकल की बात मैंने की, उसको बेसर शैली के मंदिर कहे जाते हैं। बेसर का मतलब होता है मिश्रित, जिसमें आपको नगर और शैलियों का सम्मिश्रण दिखाई पड़ेगा। और बेसिकली ये जो सम्मिश्रण है उसके जो विमान है, विमान मतलब होता है जो मंदिर का जो सबसे शिखर का जो भाग होता है उसको विमान कहते हैं। उसके विमान के बनाने में जिस तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिस शैली का प्रयोग किया गया है, उसी के आधार पर जो है मंदिरों का विभिन्न शैलियों का विभाजन भी हुआ है भारतीय मंदिर के वास्तुकला के इतिहास में। ठीक है, तो ये हमने कुछ बातें आपसे की हैं और अगली क्लास में हम आपसे बात करेंगे कल्चर एंड फिलॉसफी बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, और उसके बाद फिर हम यूनिट 2 पे चलेंगे। कुछ पूछना है आप सबों को? कुछ पूछेंगे आप लोग, या आज हम लोग अपनी कक्षा को यहाँ पे विराम देते हैं? विल स्टॉप हियर। सर, हाँ बोलिए। सर जैसे कोई भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हुआ या कोई स्मारक हुआ, तो उसको कैसे पता करते हैं कि ये किस समय का है और उस पे जो वास्तुकला है वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, बहुत बेसिक प्रश्न आपने पूछा है। और
इसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या है कि अपने इतिहास को पहले पढ़ना पड़ेगा जी। ठीक है। और इतिहास को जानने के लिए आप जानते हैं कि हर राजवंश के शासकों ने अपने शासन काल में कुछ निर्माण करवाए। अगर हम मौर्य काल की बात करते हैं तो मौर्य काल में जानते हैं कि बहुत सारे स्तूपों का निर्माण हुआ है। और ये जो जितनी भी वास्तुकला है, मैं उसी की सबसे मैंने शुरुआत यही से की थी, इसका सीधा संबंध धर्म के साथ है। जैसे सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध के उपरांत वो इतना द्रवित हुआ कि ही एडॉप्टेड बुद्धिज्म and for the propagation of the Buddhism during his kingdom at different parts of India, during the different parts of his empire, he constructed so many stupas, and he said that 84,000 stupas they were constructed by King Ashoka because of the inclination towards Buddhism. उसके बाद हम आते हैं शुंग काल में। शुंग काल में जो है पुष्यमित्र शुंग और उसके पुत्र अग्निमित्र शुंग ने they constructed other temples or the other structures. Then we come across the Kushan period, then we come across the Gupta period. तो जो आपने प्रश्न पूछा कि हम कैसे उसको पहचानेंगे, कैसे उसको जानेंगे, तो इसके लिए आपको उस काल के राजनीतिक इतिहास को, सांस्कृतिक इतिहास को पहले समझना पड़ेगा। फॉर दैट आपके पता नहीं सिलेबस में पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि नहीं, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल आप उसको नहीं करते। जैसे कि अगर मैं बात करूं समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। अगर हम बात करते हैं स्कंदगुप्त की, स्कंदगुप्त जो गाजीपुर में आप जानते हैं, वहां पे एक भीतरी का जो जगह है, वहां एक मंदिर भी है। ये सभी लोग विष्णु धर्म को मानने वाले थे और इसीलिए उनके शासन काल में, इन राजाओं के शासन काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें ज्यादा मंदिर जो है वो विष्णु धर्म से संबंधित। तो पहले इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का अपना एक धर्म होता है, चाहे राजधर्म हो। अगर हम बात करते हैं पल्लव काल के शासकों की, वो लोग शैव भक्त थे, शिव को बहुत मानते थे। यही वजह है कि अगर आप चोल काल के शासकों को देख लें, शिव के भक्त थे। अगर विदेश्वर का जो तंजौर का जो मंदिर है, वो जो है आप जानते हैं राजराजेश्वर जो मंदिर है वो शिव का सबसे बड़ा मंदिर है वो। तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे शैली की, कि किस शैली में कौन से मंदिर बना हुआ है, जिसकी अपनी एक पहचान होती है। अगर आप चले जाएं ग्वालियर के क्षेत्र में, तो वहां कुछ रीजनल शासक भी थे, जैसे कच्छप कात वंश के लोग थे। अगर आप भोज की बात करते हैं तो परमार वंश का शासक, तो उसके जो शासन काल में जो मंदिर बने हैं धार के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में ही है, उसकी अलग एक अपनी शैली है। अगर आप भोजपुर कभी जाएं, उसी निमेटका के पास में है, सांची के पास में है, तो राजा भोजेश्वर भोज ने जो भोजेश्वर शिव का मंदिर बनवाया है, जिसका कि शिवलिंग अभी तक का मतलब कि विश्व में सबसे बड़ा शिवलिंग है वो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस काल के राजनीतिक इतिहास को समझना पड़ेगा, उस काल के सांस्कृतिक इतिहास को पहले आपको जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद ही अगर आप जाते हैं, इनकाउंटर करते हैं, किसी भी मंदिर को देखते हैं, तो आप उसकी शैली के अनुसार से, उसकी बनावट के आधार पे उसको आप कह सकते हैं कि ये किस काल का मंदिर है। अभी तो हम केवल प्रकार के बारे में बात नहीं किए हैं, फिर प्लान के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन है अलग तरह के मंदिरों का। कई प्रकार के मंदिर हैं, नागर शैली के मंदिर हैं, नागर शैली में भी बहुत इसके वेरिएशंस हैं। आप खजुराहो चले जाएं, खजुराहो के जो मंदिर हैं, जो चंदेल शासकों के द्वारा 10वीं शताब्दी में बनवाए गए, उन मंदिरों की एक अपनी अलग विशेषता है। एक तो ये हो गया उसकी विशेषता के आधार पे। दूसरा, अलग अलग राजवंश के शासकों ने अपने शासन काल में अलग अलग प्रकार के माध्यम यूज किए हैं मंदिरों को बनाने के लिए। अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएं, वहां के मंदिर, कुछ मंदिर आपको ग्रेनाइट के भी मिल जाएंगे, सोप स्टोन के मिल जाएंगे। आपको गुप्त काल के जितने भी मंदिर आपको मिलेंगे वो सभी ब्रिक्स के बने हुए हैं। तो ये जो माध्यम के आधार पे भी एक आप अनुमानतः उसके तिथि के बारे में, उसके डेट के बारे में बता सकते हैं कि ये किस काल का वो मंदिर हो सकता है। बाकी और भी डेटिंग मेथड्स हैं, उसमें आपको कुछ वैज्ञानिक तकनीकों की सहायता लेनी पड़ेगी।
and then only you will be able to tell about the exact date or to which dynasty or to which kingdom this particular temple belongs. That you have to keep in mind. बहुत सारे राजवंश हुए अपने भारतीय इतिहास में. सपोज कीजिए अगर बात करते हैं हम जो है त्रिपुरी के शासकों की, ये कलचुरी वंश के शासक, उनकी अलग अलग शाखाएं थी, ब्रांचेस थी. उन लोगों ने जो मंदिर बनाए, मध्य प्रदेश के अगर क्षेत्र में चले जाएं, रतनपुर के क्षेत्र में चले जाएं, बिलासपुर में चले जाएं, आप वहां जो उन्होंने मंदिर बनाए उसकी शैली एक अलग है. अगर आप पूर्वोत्तर भारत में चले जाएं, कलिंग अगर आपके क्षेत्र में जाए, वहां के जो मंदिर बने हुए हैं उनकी एक अलग विशेषता है, जिसको कलिंग स्टाइल कहते हैं. वहां आपको मंदिरों के अलग अलग पार्ट्स के नाम अलग मिलेंगे. आपको वहां मिलेगा आपको नट मंदिर, भोग मंदिर, ठीक है, रेखा देउल, ये सभी अलग अलग इसके विभाजन है, क्षेत्रीय विभाजन है. आप गुजरात के क्षेत्र में जाएंगे, जो सोलंकी शासकों के द्वारा जो वहां मंदिर बनाए गए, वहां जो पार्ट आपको मिलेंगे, मंदिर के जो नाम मिलेंगे, गूढ़ मंडप है वहां पे, उसके बाद गुफा मंडप है, अलग अलग जो है उसके पार्ट्स आपको मिलेंगे. अगर आप राजपूताना के क्षेत्र में जाएंगे, अगर आप माउंट आबू कभी अगर आप जाते हैं, तो वहां जो मंदिर है बिमला बसाई का, लूना बसाई का जो मंदिर है, वो मार्बल के बने हुए हैं. माध्यम चेंज हो गया है. तो उसके लिए आपको राजनीतिक इतिहास को समझना किसी भी काल का बहुत ही जरूरी है. Unless and until you have the knowledge about that particular dynasty, about the kingdom, you will not be in a position to tell about the style or the chronology or the time period of a particular temple or any structure. ठीक है. इसके लिए आपको मैंने इसलिए कहा था कि आप बेसिक जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, आप उसको लेकर के एक बार पहले पढ़ जाइए. तो पूरे राजवंश कौन कौन से हैं, क्योंकि ये आपको पूरे इस कोर्स को समझने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. अनलेस नहीं तो क्या अगर मैं बात करता रहूंगा, आपके ऊपर से जाएगा कि सर कौन सी बात कर रहे हैं. कभी कुसुम की बात कर रहे हैं, कभी कुशाण पे आ जा रहे हैं, फिर कभी प्रतिहार की बात करते हैं. तो इसके लिए आपको यू शुड हैव द बेसिक आइडिया अबाउट द डिफरेंट किंगडम और द डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया. ठीक है. और किसी कोई प्रश्न? ओके सर. तो हम लोग अगली क्लास में फिर मिलते हैं. ठीक है. थैंक यू सर. ओके. सर मेरा अटेंडेंस हो गया, नेटवर्क की वजह से नहीं जा रहा था बाहर. सर मेरा अटेंडेंस हुआ ही पता नहीं, नेटवर्क बार बार डिस्टर्ब कर रहा है. यस सर. Can someone message Alok sir privately for the attendance?
मैसेज किया है भाई, सर ने सीन नहीं किया उधर।